Good morning, students. Today in number system, our topic is about the place value and the face value. So, first of all, before putting a number in any kind of chart which suggests its value or determines the value, we should know its place and face value. हमें किसी भी चार्ट में किसी भी डिजिट की सेपरेटली प्लेस या फेस वैल्यू पुट करते टाइम ये पता होना चाहिए कि वो डिजिट एग्जैक्टली कौन से प्लेस पे आ रहा है. सो फॉर एग्जांपल द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन गिवन नंबर 768 इज. आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी गिवन नंबर 768 में. Let's circle the number. Now you can see it very well. So the place value of 6 in 768 is 60. How? Because on comparing it with the place value chart, we can see it comes at the place of tens. So 6 tens means 60. Hence, the place value of 6 in given number 768 is 60. So, in the similar way, if we want to determine the value, actually the place value of any number, likewise, take another example. $9,876. The place value of 9 is 9,000. Why? Because on comparing it with the place value chart, we come to know that 9 is at thousands place, 8 at hundreds place, 7 at tens place, 0 is at 6 place. Here the digit 9 is at thousands place, so the value will be 9,000. And you know very well, in 1000 there are 3 zeros, so 9 becomes 9000. This is the required place value of the given digits. दी गई digits की required place value यही है जो हमने place value chart से compare करके उसकी निकाली है या determine कर लिया. Now let's come to the face value. The face value of a digit is the digit itself. According to definition, face value क्या है? किसी भी digit की face value वो digit खुद ही होता है. So in this case, if we take another example for face value, the face value of 6 in 768 is the digit itself. So आपने देखा हमें 768 एक नंबर दी है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6। आपको 6 की फेस वैल्यू निकालनी है इन द गिवन नंबर 768। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है? अ डिजिट, एक फेस वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की, वो डिजिट इटसेल्फ है, यानी कि अगर आप 6 की फेस वैल्यू पूछेंगे दी गई डिजिट नंबर में जो 768 है, तो इसकी फेस वैल्यू भी 6 ही रहेगी, बिकॉज वी आर नॉट कंपेयरिंग विद द प्लेस वैल्यू, क्योंकि हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में नहीं रखते हैं। जो डिजिट जैसी होती है उसे वैसा ही लिखते हैं। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर इट्स 71, बट मैं सेपरेटली कहूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे सर इट्स ओनली 1। एंड इन 71 द डिजिट 7, आप इसे क्या पढ़ेंगे? सेपरेटली 7 ही पढ़ेंगे, नॉट इंक्लूडिंग, मैं पहले बोल रहा हूँ सेपरेटली। सो 71 बिकम्स 7 and 1। सो हम ये भी कह सकते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कुछ इस तरह से अंतर है कि मैं आपको कुछ डिजिट्स दे रहा हूँ 7, 0, 6, आप इन डिजिट्स को यूज करेंगे और एक नंबर बनाएंगे। तो आप कई टाइप से लिख सकते हैं इसे 706, 760, 076 और 067। तो हमारे पास एक 4 पैटर्न्स हो गया। इन 3 डिजिट्स को यूज करके हम इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। सो ये डिजिट्स अलग अलग आपके लिए थे 7, 0 एंड 6। सो ये फेस वैल्यू थी सभी डिजिट्स की, इसीलिए हम इन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट आफ्टर राइटिंग ए नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स, ये क्या बन गई? नॉट 7, 0 एंड 6, 706, 760, 76 एंड 67। तो आपने सीखा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में हल्का सा ही फर्क है कि डिजिट्स को आप एज इट इज बोलेंगे, और जब डिजिट्स मिलके नंबर बन जाती हैं तो वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। नाउ मैं आपको एक स्पेशल नोट इसमें देना चाहूंगा। द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 is always 0 without any comparison। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सिर्फ 0 की ही हमेशा 0 होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 0 को किसी भी प्लेस पे रख दिया जाए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? डेफिनेटली 0 हो जाती है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। लेट्स go further to other questions। अब हम पढ़ेंगे the difference between a successor of a number and a predecessor of a number। Listen carefully। सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर्स क्या हैं? वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट, हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, बट तब हम इन्हें पढ़ते थे द नंबर जस्ट आफ्टर ए given number is called its successor। So
what did we come to know from the successor? Let's come to the point. The number just after a given number is called its successor. तो जो नंबर दिए गए नंबर के ठीक पास आता है, इट्स कॉल्ड इट्स successor. Example, first, the successor of 14 is 15. Number 2, the successor of 119 is 120. तो लेट्स ऑब्जर्व, हमने क्या सीखा? द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर. आपकी गिवन नंबर 14 थी, इसके जस्ट आफ्टर, ठीक बाद में, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट, काउंटिंग में 14 के नेक्स्ट क्या आता है? 15. सो हम बस 1 इंक्रीज करेंगे. 14, the successor of 14 is 15. In the same way, the successor of 119 is one more, 120. तो आप इसे इजीली एक फॉर्मूले के साथ लर्न कर सकते हैं. सक्सेसर is equal to given number plus 1. In the same way, अगर आप इसे क्लियरली समझना चाहते हैं तो मान लीजिए, let the given number be 706. So to find its successor, we should add 1 in the given number. So 6 and 1 is 7. There are no digits below 7 and 0, so let them write as they are. We get the successor of 706 as 707. आपको जो successor 706 का मिला है वो 1 more than है, इसीलिए 707 फाइनल ही आंसर आपका आ चुका है. So let's come to another topic. predecessor the number just before a given number is called its predecessor. Example, the predecessor of 46 is 45. So observe the definition.
Our next topic is predecessor. And what is a predecessor? According to the definition, the number just before a given number is called its predecessor. Example, the predecessor of 46 is 45. वो क्या कहना चाह रहा है? अगर आपको किसी नंबर का प्रीडिसीसर पता करना है तो आप उस नंबर के जस्ट बिफोर, जैसे आपसे काउंटिंग बैकवर्ड कराई जाए तो 10 से बिफोर क्या आता है? 9, 9 से बिफोर 8, 8 से बिफोर 7. इट मीन्स उल्टी गिनती टाइप, रिवर्स काउंटिंग. सो प्रेडिसेसर भी सेम है. आपको बस दी गई नंबर में से 1 लेस देन लिखना है. लाइक 10 है तो 9, and if there is 100 it becomes 99, 1000 it becomes 999. तो बस आपको 1 माइनस करना है या 1 लेस देन रखना है. So in the similar way, the predecessor of 46 is 1 less than, that is 45. तो हमने देखा कि 46 का predecessor रिवर्स काउंटिंग ले लीजिए या 1 माइनस कर दीजिए, जो नंबर आएगा यही उसका predecessor होगा. Let's take another example for a bigger number. The predecessor of 997 is 996. तो हमने देखा प्रेडिसेसर के एग्जाम्पल क्या है कि दिए गए नंबर में से 1 लेस देन रहता है. 46 minus 1, 45. And similarly, 997 minus 1, 996. To keep it remember, let me write a formula. Given number minus 1 is equal to predecessor. तो आपको कोई predecessor निकालना है तो आप दी गई नंबर मान लीजिए 1000 एंड आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1. सो बाय टेकिंग कैरिंग ओवर्स वी गेट 9, 9 and 9. So the predecessor of given number 1000 is 1 less than, that is 999. So successor and predecessors के examples आपके लिए मैंने राइट डाउन किए हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर to keep it in your memory for further use.